Hello dear students, subscribe the channel and touch the bell icon for notification. Today, we shall start the next part of the lesson, shown in the title of this video. Before watching this video, please read your lesson from your textbook. Okay, now, let's start. Dynasty 1290 AD to 1320 AD. The rule of Khilji dynasty started with the ruler Jalaluddin. After 6 years' rule of Jalaluddin, ambitious Sultan Alauddin came to the throne of Delhi. He expanded his empire by conquering North India, Gujarat and South India. He started the system of keeping permanent army in Delhi. He introduced a system of mark, dag, face, chehra, for distinctive identification of army horses and soldiers. He also made administrative reforms like price regulation, market control and hoarding regulation. After the death of Alauddin Khilji, the state was in turmoil. Ghiyas-ud-Din Tughlaq was the one who ended the Khilji dynasty and started the Tughlaq rule from the throne of Delhi. Khilji Vansh 1290 AD 1320 AD. खिलजी वंश का शासन शासक जलालुद्दीन के साथ शुरू हुआ। जलाल-उद-दीन के 6 साल के शासन के बाद महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने उत्तर भारत, गुजरात और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने दिल्ली में स्थायी सेना रखने की व्यवस्था शुरू की। उन्होंने सेना के घोड़ों और सैनिकों की विशिष्ट पहचान के लिए मार्क, दाग, चेहरा की एक प्रणाली शुरू की। उन्होंने मूल्य विनियमन, बाजार नियंत्रण और जमाखोरी विनियमन जैसे प्रशासनिक सुधार भी किए। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद राज्य में उथल-पुथल मच गई थी। गयास-उद-दीन तुगलक वह था जिसने खिलजी वंश को समाप्त किया और दिल्ली के सिंहासन से तुगलक शासन की शुरुआत की। Know this. Famous poet Amir Khusro was there during the rule of Alauddin Khilji. He composed famous literary works like Qirat-ul-Sadyan, Ashika, Nur Sipihar etc. यह जानो। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो थे। उन्होंने किरात-उल-सदयान, आशिका, नूह सिपिहर आदि जैसी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं की रचना की। Tughlaq dynasty 1320 AD to 1414 AD. During the Tughlaq dynasty, Muhammad bin Tughlaq was one of the most talented sultan. He implemented some schemes during his rule, including relocation of the capital from Delhi to Daulatabad, symbolic currency experiment etc. Most of the schemes failed due to lack of practicality as well as lack of planned implementation. Hence, these schemes have gone down in history as eccentric schemes. Ibn Battuta, an African traveler, visited India during the time of Muhammad Tughlaq. Muhammad Tughlaq was succeeded by his paternal cousin Firoz Shah Tughlaq. After the death of Firoz Shah, Tamur Lang invaded Delhi 1398 AD to 1399 AD. Because of this attack, the foundations of power were shaken and Tughlaq power became limited. Sayyid dynasty 1414 AD to 1451 AD. And Lodhi dynasty 1451 AD to 1526 AD. After the end of Tughlaq dynasty, Khizra Khan established the Sayyid dynasty. After the Sayyid dynasty, Balal Lodi established the Lodi dynasty. Balal was the first Afghan ruler of the Lodi Sultanate. The last emperor of the Lodi dynasty was Ibrahim Lodi. He was defeated by Babur in the first battle of Panipat in 1526 AD and Sultanate era came to an end and Mughal rule started. Tughlaq Rajvansh 1320 1414 तुगलक वंश के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक सबसे प्रतिभाशाली सुल्तानों में से एक था। उन्होंने अपने शासन के दौरान कुछ योजनाओं को लागू किया जिसमें राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित करना, प्रतीकात्मक मुद्रा प्रयोग आदि शामिल थे।
व्यावहारिकता की कमी के साथ साथ नियोजित कार्यान्वयन की कमी के कारण अधिकांश योजनाएं विफल रहीं। इसलिए ये योजनाएं इतिहास में संघ की योजनाओं के रूप में नीचे चली गई हैं। इब्न बतूता, एक अफ्रीकी यात्री, मोहम्मद तुगलक के समय में भारत आया था। मोहम्मद तुगलक को उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने उत्तराधिकारी बनाया था। फिरोज शाह की मृत्यु के बाद तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया, 1398 AD, 1399 AD। इस हमले के कारण सत्ता की नींव हिल गई और तुगलक शक्ति सीमित हो गई। सैयद वंश 1414 ई, 1451 ई और लोधी वंश 1451 ई, 1526 ई। तुगलक वंश के अंत के बाद खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश के बाद बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी सल्तनत का पहला अफगान शासक था। लोदी वंश का अंतिम सम्राट इब्राहिम लोदी था। वह 1526 ई में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से हार गया और सल्तनत युग समाप्त हो गया और मुगल शासन शुरू हो गया। State administration. The Delhi Sultanate, which was established in the 13th century, was unique in terms of state governance. The Sultan was at the center of the Delhi Sultanate. The power of Sultan was paramount. He was also the supreme commander, the supreme head of the executive and the supreme judge. There was a cabinet to help the Sultan. Cabinet ministers and officials were appointed by the Sultan himself. The Sultanate system was divided into three sections, namely central, provincial and local. Central rule: the cabinet was the chief after the Sultan. The Sultan's chief minister was called the Wazir, who was the head of the administration. Besides this, the cabinet consisted of army, postal department, religious department, foreign affairs department, intelligence department etc. Thus, more or less modern cabinet-like arrangement was seen at that time. राज्य प्रशासन. दिल्ली सल्तनत, जो शताब्दी में स्थापित हुई थी, राज्य शासन के मामले में अद्वितीय थी। सुल्तान दिल्ली सल्तनत के केंद्र में था। सुल्तान की शक्ति सर्वोपरि थी। वह सर्वोच्च कमांडर, सर्वोच्च प्रमुख भी था, कार्यकारी और सर्वोच्च न्यायाधीश। सुल्तान की मदद के लिए एक कैबिनेट था। कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों की नियुक्ति खुद सुल्तान ने की थी। सल्तनत प्रणाली को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, अर्थात केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय। केंद्रीय शासन: सुल्तान के बाद मंत्रिमंडल प्रमुख होता था। सुल्तान के मुख्यमंत्री को वजीर कहा जाता था, जो प्रशासन का मुखिया होता था। इसके अलावा कैबिनेट में सेना, डाक विभाग, धार्मिक विभाग, विदेश मामलों के विभाग, खुफिया विभाग आदि शामिल थे। इस प्रकार उस समय कमोबेश आधुनिक कैबिनेट जैसी व्यवस्था देखी गई थी। Know this. During the time of Alauddin Khilji, the postal system came into existence to fulfill government requirements. Runners carried royal messages and orders. These runners were in all the important centers of the state. In this way it can be called the initial version of the current postal system. यह जानो। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सरकारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डाक व्यवस्था अस्तित्व में आई। धावकों ने शाही संदेश और आदेश दिए। ये धावक राज्य के सभी महत्वपूर्ण केंद्रों में थे। इस प्रकार इसे वर्तमान डाक व्यवस्था का प्रारंभिक संस्करण कहा जा सकता है। Dear students, this brings to the end of this part of the video. Hope you must have understood everything. Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson.
Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Brams School.